Hello everyone, welcome again in my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to watch some important MCQs for science, and this is for elementary education completion certificate exam 2024. Yes, of course, it is for 8th board examination, and these questions are according to blueprint. So watch this video carefully. Question 1 is, it is useful in extinguishing the fire caused by inflammable substances like petrol. You know what are inflammable substances that has low ignition temperature and can catch fire easily. Okay, so petrol is one of them and it cannot be extinguished with water. Options are water, CO2 and oxygen, and none of these. So it cannot be extinguished with the help of water because water is heavier than petrol. Water पेट्रोल से क्या है, हैवी है. जब वाटर से पेट्रोल की आग को बुझाएंगे, उसकी फायर को बुझाएंगे, तो वाटर कहाँ चला जाएगा, पेट्रोल के नीचे, और पेट्रोल वाटर के ऊपर आ जाएगा. तो वो जो फायर है वो कंटिन्यूअस जलती रहेगी. So the answer will be CO2, and you know oxygen is cannot be used for extinguishing any fire because ऑक्सीजन का यूज क्या है, ये तो फायर को प्रोड्यूस करती है. फायर है, कंबस्शन है, वहां पर क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए. इसलिए हम इसको तो फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम में नहीं ले सकते. आग को बुझाने के लिए हम ऑक्सीजन को काम में नहीं ले सकते. तो हमें अल्टीमेटली क्या यूज करना पड़ेगा, CO2 काम में लेना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग. So you should know the answer is ignition temperature. Options are melting point, flame, none of these, and ignition temperature. So correct answer is ignition temperature. It is the minimum temperature that is required to start burning. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की हमें बर्निंग करनी है, उसका कंबशन करना है, तो उसके लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर उसको देना होता है, जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. Question 3 is, which of the petroleum product is used in road construction? Options are petrol, diesel, bitumen, paraffin, wax. So right answer is bitumen, option C, because bitumen is, you can see bitumen is looks like coal tar and it is a byproduct of petroleum. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होना चाहिए, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, बिटुमेन, जिसे हम रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं. Question 4 is, which liquid fuel is used at home? Options are LPG, CNG, coal and petrol. So you know coal is not a liquid fuel, so answer should not be coal, and petrol and CNG are vehicle fuel. इनको हम vehicle में काम में लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, LPG, liquefied petroleum gas. Question 5. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called. जो dead vegetation है, जो plants हैं जो dead हो चुके हैं, उसका coal में convert होना, coal क्या है, it is a form of carbon. ठीक है, तो dead vegetation का coal में जो conversion है, उस process को, slow process को क्या कहते हैं. Options हैं oxidation, carbonization, hydrogenation and reduction. मैंने आपको hint दिया है कॉल, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है इसकी, तो मींस आंसर हमारा क्या होगा, कार्बनाइजेशन, ऑप्शन बी. Question 6 is, the color of the outermost part of candle flame is black, blue, yellow and red. You know very well the image or diagram of candle flame, so you can easily say the answer is blue. The outermost part of candle flame is blue, option B. और आप इस फ्लैम की फिगर को भी देख लें, यहां से आपके कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. आउटर मोस्ट जोन होता है ब्लू बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, इसलिए ये हॉटेस्ट पार्ट भी होता है. मिडिल जोन यहाँ पर होता है पार्शियल कंबस्शन, इसलिए मॉडरेटली हॉट है, मींस मध्यम. एंड द कलर ऑफ दिस फ्लैम इज येलो. एंड इनर मोस्ट पार्ट, इस फ्लैम का जो इनर मोस्ट पार्ट है
वहां क्या होता है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होती है, इसलिए कलर कैसा होता है इसका, ब्लैक, क्योंकि पूरी तरह से जल नहीं पाता, अनबर्न्ड है, इसलिए लीस्ट हॉट पार्ट है, लीस्ट मीन सबसे कम। ओके, यहां से आपके कई क्वेश्चंस कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 इज विच फ्यूल इज लेस पॉल्यूटिंग फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि लेस पॉल्यूटिंग है। ठीक है, ऑप्शंस हैं पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas and liquefied petroleum gas. You know, all these are fuel for vehicle, but the question is about less polluting. So answer will be CNG, that is option C, compressed natural gas. You can see LPG, while still cleaner than other fossil fuels. Here we can say LPG is cleaner than petrol and diesel, but LPG contains higher carbon contents. That's why it is not more cleaner than CNG. But CNG has less carbon substance, so that's why CNG is the right answer. Okay. Question 8 is which of the following fuel has highest calorific value? Wood, kerosene, LPG and hydrogen. You know, calorific value क्या हुआ, यानी 1 kg अगर किसी सब्सटेंस को, किसी फ्यूल को हम बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आप जानते हैं वुड जब लकड़ी को आप जलाएं, या केरोसिन है, एलपीजी एंड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हियर देयर इज अ टेबल ऑफ फ्यूल एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू, यू कैन इजीली कंपेयर। हाइड्रोजन हैज 1,50,000 किलोजूल पर केजी, मींस हाइड्रोजन की अगर 1 केजी को हम कंबशन करते हैं, ठीक है, इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, इसका 1 केजी, तो यहां से 1,50,000 किलो जूल आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, और यहाँ पे आप देखें वुड का तो सबसे कम है, वुड है, केरोसिन का 45,000 है, एलपीजी का 55,000 है, तो हाईएस्ट किसका है, हाइड्रोजन का, तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 9. Which poisonous gas is formed due to incomplete combustion of fuel? Fuel का incomplete combustion हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, keep this thing in mind. Incomplete combustion. Options हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। So you know oxygen and nitrogen are not poisonous gas. Carbon dioxide and carbon monoxide both are harmful for us, but here the question is about poisonous gas and incomplete combustion. So answer will be carbon monoxide. Okay, option B is the right answer. And here you can see incomplete combustion. Complete combustion means when ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, मींस कार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा, इन दैट केस CO2 will be produced. Okay, and in incomplete combustion where oxygen is insufficient, so carbon will not burn completely, so it produce CO, that is carbon monoxide. Okay, Di means two oxygen and mono means one oxygen. Okay, तो CO, यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन इनकम्प्लीट कंबशन। अगर यहाँ कंप्लीट कंबशन होता तो क्या आंसर होता, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCRA इज रिलेटेड टू रनिंग ऑफ व्हीकल, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सेविंग ऑफ पेट्रोल और डीजल, एंड फॉर गुड एजुकेशन. So you know very well what is the right answer. Option C is the right answer. That is for saving of petrol or diesel. And what is the full form PCR? That is Petroleum Conservation Research Association. And this organization is established in India. India में है ये
ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका काम क्या है, पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल हैं उनको कैसे सेव किया जाए उनके ऊपर इनका फोकस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट की बात आ रही है। ऑप्शंस आर किलो जूल पर केजी, किलोग्राम पर केजी पर किलो जूल, जूल एंड वॉट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, that is kilojoule per kg. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. Okay, so its unit will be kilojoule per kg or kg, kilojoule per kg or kilojoule per kilogram, you can say anything. Okay, so next question is which of the following is an example of spontaneous combustion? Oxygen, wood, phosphorus and nitrogen. Think about it. What will be the right answer? Right answer is phosphorus, option C. Okay, it is an example of spontaneous combustion. And what is spontaneous? Spontaneous means something that is burned suddenly, instantly, okay, without help of any external heat. You can say its ignition temperature is quite low. बहुत कम होता है इनका इग्निशन टेम्परेचर, इनको एक्सटर्नल हीट की जरूरत पड़ती नहीं है। एनवायरनमेंट की जो भी हीट है उससे ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं सब्सटेंस। ओके, सो वन ऑफ देम इज फास्फोरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी फायर को आपको अगर बुझाना चाहते हैं, एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, तो उस केस में आप किसे काम में लेंगे? पेट्रोल, वाटर, सैंड और कार्बन डाइऑक्साइड। What is the right answer? Right answer will be option D, that is carbon dioxide. Water cannot be used as a fire extinguisher in case of electrical fire because water is a good conductor of electricity. Okay, so it could spread the fire more. And petrol is also a highly flammable substance, so it cannot also used to extinguish anything. And about the sand does not cool down the electrical component. जब electrical component में जहाँ जो electrical equipment जहाँ पे वो फायर लगी हुई है उसके टेम्परेचर को डाउन करने का काम नहीं करता सैंड, एंड इट विल एक्सटिंग्विश द फ्लेम फ्रॉम द सरफेस। ये क्या करता है, केवल जो सुपरफिशियली जो टॉप जो फ्लेम है उसको ही बुझाने का काम करता है, लेकिन उसके सैंड के नीचे भी फायर कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगर वो जैसे ही उस सैंड को हटाएंगे अपन, अगेन फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द बेस्ट। And you can the alternative, that is dry powder like sodium bicarbonate means baking soda or potassium bicarbonate. So these powders can be used to extinguish the fire in electrical equipment. Okay students, now question 14 is which gas is increased in the atmosphere due to deforestation? So options are oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and option D is both B and C, that is carbon dioxide and nitrogen. So what will be the answer? Answer is option B, carbon dioxide. Okay, because due to deforestation, if plants will be not available, then CO2 will not be absorbed by the plants and definitely it will increase. क्योंकि plants क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज करते हैं और O2 को प्रोड्यूस करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और इसके साथ ही हम देखें कभी कभी डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है इनको बर्न कर दिया जाता है, इनको जला दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो द रीजन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका बहुत अमाउंट हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसके बर्निंग से, फॉरेस्ट की बर्निंग से। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है इट मींस CO2 प्रोड्यूस होती है, जो भी कार्बनिक सब्सटेंस बर्न होता है। ओके,
So right answer is carbon dioxide. Question 15 is what suggestions will you give for stopping deforestation? Deforestation को stop करने के लिए क्या suggestions हो सकते हैं? Reusing paper, recycling of paper, saving paper, all the above. You know the answer will be D. That is all the above. We should reuse paper, we should recycle paper and save paper. पेपर को तुम्हारा काम में ले, रीयूज करें, रिसाइकल करें उसको, पेपर का अगेन उसकी फैक्ट्री में पहुंचकर वापस से इसको प्रोसेस के थ्रू वापस से पेपर या अदर जो हार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है वो बन सकता है. एंड सेविंग पेपर, पेपर को भी हम सेव करने की कोशिश करें, कम से कम उसे काम में लें. ओके, सो ऑल दीज मेथड्स कैन stop deforestation. Okay. Next question 16 is which of the following is an endangered species? And options are giant squirrel, Indian skimmer, leaf-nosed parrot, and all of these. So students, the answer is option D, because all the options are endangered species, that is giant squirrel, Indian skimmer and leaf-nosed bat. All these are endangered species. And you know what are endangered species? The species which are on the border of the extinction. Means ऐसी species जो कि खत्म होने जा रही हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं. उनको अगर सेफ नहीं किया गया, उनको अगर उनका रिजर्वेशन नहीं किया गया, उनको सिक्योर नहीं किया गया, तो वो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे इस अर्थ से. So these are endangered species. Question 17 is another name of sagwan is. Options are teak, cedar, pine, and of these. So the another name of sagwan is teak. Option A is the right answer. Okay. Question 18 is which is helpful in preventing soil erosion? Options are tree, wild animals, factory, and deforestation. Question is helpful in preventing soil erosion. So trees are helpful in preventing soil erosion. So option is A. Question 19 is the first reserve forest in India is. Options are Kaziranga National Park, Bharatpur Sanctuary, Satpura National Park, and Pachmari Garden. So the right answer is Satpura National Park, option C. Okay, it is situated in Hoshangabad district in state of Madhya Pradesh, MP में है ये reserve forest. Okay. Question 20 is which of the following is an example of biome? Options are forest, grassland, desert, and all of these. So all these are examples of biome, that is forest, grassland, and desert. And oceans is also example of biome. So option D is right. Now question 21 is the unit of frequency, or the question will be frequency is measured by. Options are second, meter, hertz, and newton. So right answer is hertz. Option C is the right answer for the unit of frequency. Okay. You can represent it by H, capital H, Z. It is also a symbol of hertz. Okay. Question 22. On which factor does the loudness of sound depend? Which factor is responsible for loudness of sound? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन करता है? ऑप्शंस हैं पिच, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंड नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड, दैट इज ऑप्शन बी. लाउडनेस मींस इंटेंसिटी or volume of a sound, and definitely it depends on amplitude of the sound wave, and loudness is directly proportional to the square of the amplitude. जो loudness है वो amplitude के square के proportional होती है. ठीक है, you can see loudness is proportional to amplitude, square of amplitude.
अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल करते हैं 2 का स्क्वायर, लाउडनेस हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर हम एम्पलीट्यूड को इसका थ्राइस कर दें, ठीक है, इसको 3 टाइम्स इसको हम इंक्रीज करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इट मींस लाउडनेस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यू कैन सी लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following suggestions will you give your friend to reduce noise pollution in residential areas? Residential areas में noise pollution को reduce करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? Reduce the sound volume of television and radio. Correct है, हमें जो रेडियो और टेलीविजन है उसके साउंड वॉल्यूम को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। सेटिंग अप इंडस्ट्रियल मशीन्स अवे फ्रॉम द सिटीज, तो इंडस्ट्रियल मशीन्स से उन्हें सिटी से दूर उनका सेटअप लगाना चाहिए, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। रिड्यूस द यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न, हमें जो व्हीकल हॉर्न से उनका यूज कम करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। साउंड की लाउडनेस को आप मेजर करने के लिए किस यूनिट को काम में लेंगे? ऑप्शंस हैं ऑसिलेशन पर सेकंड, डेसिबल एंड हर्ट्ज। And you know very well the answer is decibel. Option C is the correct answer. Okay, unit of loudness is decibel and you can represent it small d and capital B, dB, decibel. Okay, and here you can see there is a table for normal breathing. It is 10 decibel, 10 decibel for normal breathing and soft whisper. जब आप हल्की फुल्की जो कानाफूसी करते हैं ना बहुत स्लोली, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 85 मीटर एंड इट्स लाउडनेस इज 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए 60 डेसिबल है। बिजी ट्रैफिक का जो साउंड होगा उसकी लाउडनेस क्या होगी 70 डेसिबल एंड एवरेज फैक्ट्री उनका साउंड कितना होता है 80 डेसिबल। तो इस टेबल को भी आप याद रख सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now question 25 is the length of vocal cords in man is approximately. Options are 5 mm, 10 mm, 15 mm and 20 mm. And you know the correct answer is 20 mm. That is option D. The vocal cords in man are about 20 mm long. 20 mm. Okay, and in women it is around 15 mm. Okay. 20 mm means 2 centimeter. Okay, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 20 millimeter means 2 centimeter, and in the case of woman it is 1.5 centimeter or 15 mm. Okay, students. Now last question is, if the frequency of vibration is high, the sound will be. अगर किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ऐसी है, हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तो साउंड कैसा होगा? लेस, डिम, शार्प और स्ट्रॉन्ग। सो आंसर इज शार्प, ऑप्शन सी। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच। फ्रीक्वेंसी है किसको डिटरमाइन करती है? इसके पिच को डिटरमाइन करती है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हाई पिच होगा, इट मींस साउंड कैसा होगा? शार्प होगा। So students, these are 26 important MCQs for your examination, and in part 2 you will see the remaining questions. Till then, keep watching Aradhyan's Tutorial Hub, and if you're not subscribed this channel yet, please subscribe and don't forget to like this videos.